Today I am going to discuss a very basic concept in physics. It belongs to basic maths कह सकते हैं आप. यहाँ पर वेरिएबल क्वांटिटीज के बारे में हमें डिस्कस करना है. हाउ वेरिएबल क्वांटिटी वेरीज with change in other variables. All right. So let us start the discussion. Variable quantity. Students, how we can define a variable quantity that varies? Very simple definition. Quantity, we can say quantity that varies. All right. Now something is varying without any reference. अगर कुछ नहीं बताया गया कि ये क्वांटिटी वेरिंग है किसके रिस्पेक्ट में, सो वेल अंडरस्टूड है कि ये टाइम के रिस्पेक्ट में ही है. से अगर हम कहते हैं कि फॉर ए मूविंग बॉडी इफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, दैट मीन्स वेल अंडरस्टूड दैट वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग रेफरिंग टू टाइम. As time grows, velocity is increasing. Or if you can say force is changing, simply force is changing, that means force is changing with respect to time. So if reference variable with respect to which it is changing is not mentioned, well understood that it is the time. All right. So time is the best example of independent variable or reference variable. All right. So as I told you, in an equation, whenever we write y is a variable that depends on x as y is equals to fx, or we can say y equals to an expression in terms of x. All right. So in such case we say that y is dependent variable. Y is dependent variable, but it depends on whom? It depends on x. X can be called as reference. It can be called as independent, or it can be called as base variable. Now in the expressions, जब भी हम कोई फॉर्मूला लिखते हैं, कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं, so जो डिपेंडेंट वेरिएबल है that appears on the left hand side and it is raised to the power 1. Suppose let us express volume of a sphere in terms of radius. So we write 4/3 pi into r cube. So here you can see this 4/3 pi is constant. So therefore we can write volume is proportional to, it depends on r cube. So here इस एग्जाम्पल में वॉल्यूम इज डिपेंडेंट वेरिएबल दैट डिपेंड्स ऑन इंडिपेंडेंट और रेफरेंस वेरिएबल आर. सी द डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इट इज रेज्ड टू द पावर 1. नाउ इसी डिपेंडेंस को अगर हम टर्न करते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और वी टू कैन से रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम रेज टू द पावर 1/3 या क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम. इसका मतलब है कि देखिए फर्स्ट एक्सप्रेशन में तो वॉल्यूम था जो कि आर पे डिपेंड कर रहा था. सेकंड एक्सप्रेशन में रेडियस को हमने वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में वी एक्सप्रेस्ड. सो इन द सेकंड एक्सप्रेशन रेडियस डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम. सो in both of the situations you can see the variable which is dependent, which is kept on the left and raised to the power 1, whereas reference variable raised to some powers. All right. Whenever we plot variation of dependent variable with respect to the reference variable, जैसे कि हम कई बार ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस. हम ग्राफ प्लॉट करते हैं लाइक फोर्स एंड डिस्टेंस, लाइक वेलोसिटी एंड टाइम. सो basically along y-axis we take dependent variable and along x-axis we take the reference variable or on which y depends. All right. See, in case y proportional to x raised to the power n,
दिस इज कॉल्ड पावर फंक्शन। जैसे कि आप देखिए कि वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस रेज टू द पावर 3, these are called power functions. All right, now in such case we can write, see, especially we can apply binomial approximation. According to binomial approximation, 1 plus x raised to the power n can be nearly equals to 1 plus nx. The condition for it is the 1 plus something, that thing should be very small compared to 1. All right, in physics we take the limit is up to 5%. Here basically x should be less than 1 out of 20, or we can say it is less than 0.05. अब आप सोचिए कि 1 में अगर 0. if it is 0.05 out of 1, so we can say if we make it 100, it will become 5. So therefore we say this binomial approximation is applicable up to this approximation can be applicable up to 5%. All right, so let's come back to this power function. Power function where y is proportional to x to the power n. So here we can write, if y is proportional to x raised to the power n and x changes by some alpha percent say, and this alpha is less than 5. So variation of the dependent variable, that is reference variable, is less than 5%. In such case we can, using binomial approximation, we can write delta y by y equals to the power into delta x by x. And how to predict the change, how to declare the change? Here we can write, see, if it is declared in the question ki x changes by some alpha percent, and we have to first of all ask whether alpha is less than 5 or not. अगर ये 5% से कम है, then we can simply declare that y changes by corresponding power into the change in the base quantity, that is x, this much percentage. Straight away this is the approach to find the change in dependent variable. All right, तो अगर मान के चलिए कि यहाँ पे रेडियस का वेरिएशन कुछ बताया गया, देन हाउ टू गेट द वॉल्यूम चेंज. सपोज कीजिए रेडियस में चेंज कुछ गिवन है, से 1%, देन वॉल्यूम विल चेंज बाय द पावर इनटू करस्पॉन्डिंग चेंज इन द रेडियस. ऑलराइट, अनदर थिंग वी शुड मार्क, दिस पावर n प्लेज रोल in deciding the nature of, relative nature of change of x and y, because यहाँ पर हमने जैसे y और x में रिलेशन लिखा है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं, we have expressed delta y upon y equals to the power into delta x upon x. All of us know that delta y upon y is fractional change in y and delta x by x is called fractional change in x. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि if we take n is positive, the power is positive. If the power is positive, remember x and y changes with the same nature. That means यहाँ पर same nature of change, same nature of change. Change आप जानते हो, there are two types. One is positive change, that is increment, and negative change, that is loss. तो सपोज करो यहाँ पे n पॉजिटिव है, इफ y इंक्रीजेस देन x विल ऑल्सो इंक्रीज. तो यहाँ पे सेम नेचर ऑफ चेंज हम कहेंगे, इफ f(x) इंक्रीजेस, y डिपेंड्स ऑन x, इट विल ऑल्सो इंक्रीज. सिमिलरली इफ वी टेक n नेगेटिव, n लेस देन 0, इफ n इज नेगेटिव, then the signs of delta y by y and delta x upon x will differ. So हम कहेंगे opposite nature of change, opposite nature of change. What does it mean? It means if x increases in such case, y will decrease. X decreases, that will result y will increase. Now take some examples. Say in the previous example we had, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था कि वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे पावर पॉजिटिव है, यहाँ पे पावर पॉजिटिव है यानी पावर इज 3. तो हम कह सकते हैं इन सच केस इफ रेडियस इंक्रीजेस देन दैट विल लीड टू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विल इंक्रीज डेफिनेटली एज द पावर इज पॉजिटिव. बट वेयर एज अगर कूलम्ब्स लॉ की बात हम करेंगे कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज प्रोपोर्शनल टू 1/r².
और we too can say force is proportional to r raised to the power -2। तो देखिए अब जो डिपेंडेंस है डिस्टेंस का वो -2 है। नाउ वी कैन से if distance between two charges increases the dependent variable force will decrease down। This is the consequence of positive and negative powers। All right, so remember, most importantly, you can get questions either the dependent how to find the unknown, the change in the quantity that is unknown quantity, like or एक question में you will get a given information regarding the change in the base quantity and what will be the change in the unknown quantity or the dependent variable। तो यहाँ पर स्ट्रेट एक बात फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक बात स्ट्रेट याद रखना कि अगर if we have y is proportional to x raised to the power n and in a question if you find x changes by some alpha % से और आपने देख लिया कि जो अल्फा है वो लेस देन 5% है, देन आप क्लियरली डिक्लेयर करोगे कि y should change by the power n and corresponding change in the base quantity that is alpha %। This is the declared result। Alright, अब देखिए यहाँ पर इस अप्रोच के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस हम ट्राई करना चाहेंगे, जैसे कि किस टाइप के क्वेश्चन हमें वी कैन एक्सपेक्ट। लेट अस स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। सी, एक क्वेश्चन में ये बताया गया है स्टूडेंट्स, फॉर ए मूविंग बॉडी of constant mass, even if constant mass is not given to you, well understood, if nothing is mentioned then we can regard mass to be constant। for a moving body of constant mass, if velocity increases by say small percentage 0.3%, then we have to find change in its kinetic energy। एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से लेट अस स्टार्ट। सो फॉर ए मूविंग बॉडी ऑफ कांस्टेंट मास इफ वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय 0.3%, then how kinetic energy will change। See, in this discussion we have two quantities, one is kinetic energy, one is velocity, and unknown quantities kinetic energy because velocity के बारे में यहाँ पे given है। so हम लिखेंगे कि what is the formula, kinetic energy is 1/2 into mass into v square। अब इस एक्सप्रेशन में या फॉर्मूला में देखिए इट इज वेल मैनेज, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे अननोन है एंड वी हैव केप्ट इट ऑन द लेफ्ट, सिंगल पावर है इसमें। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हाफ और m दोनों ही कांस्टेंट है, तो हम कहेंगे डिपेंडेंसीज लाइक दिस काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वेलोसिटी इज द रेफरेंस वेरिएबल। फिर हम कह सकते हैं कि इन दिस क्वेश्चन इट इज ऑलरेडी गिवन दैट वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय 0.3%। ask yourself whether this 0.3 is far beyond less than 5. Yes, it is very small compared to 5, so we can straight away go for kinetic energy increases by corresponding power is 2 into the change in the base quantity velocity, that is 0.3%. so kinetic energy will increase by 0.6%. so this is the result we express, very simple. Similarly, take another example. Say for another example we have, if orbit radius of a satellite increases by 1.6%, ये इंफॉर्मेशन गिवन है फॉर ए मूविंग सैटेलाइट। ए सैटेलाइट गोज अराउंड ए प्लैनेट और उसमें 1.6% रेडियस में इंक्रीमेंट है, देन फाइंड द चेंज in its orbital speed।
इफ यू रिकॉल द फॉर्मूला फॉर ऑर्बिटल स्पीड, यहाँ पे हम स्टूडेंट्स ये पढ़ते हैं, देखिए कि दिस बी द प्लैनेट एंड अराउंड विच सैटेलाइट इज गोइंग अराउंड, दिस इज सैटेलाइट, it has orbital speed say v naught, and the orbit radius is centered to the satellite distance, that is say r. So the formula is orbital velocity is given by under root capital G capital M upon r. In this formula, इस फॉर्मूला में आप देखिए कैपिटल G और मास ऑफ द प्लैनेट यानी कैपिटल M, ये दोनों है कांस्टेंट. यहाँ पे वेरिएशन किसका है? रेडियस इज चेंजिंग, एज ए कंसिक्वेंस ऑर्बिटल स्पीड इज सपोज टू चेंज. तो यहाँ पे डिपेंडेंस को हम कहेंगे कि वी नॉट, जो कि जिसके बारे में आपको बताना है, विच इज द अननोन क्वांटिटी, इट हैज टू बी केप्ट एज डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड हाउ इट डिपेंड्स ऑन ऑर्बिट रेडियस, इट इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट आर. ठीक है, 1/√r. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऑर्बिटल स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू सी रेडियस रेज टू द पावर -12. ठीक है ना. Then so orbital speed is a dependent variable that depends on radius, orbit radius as reference variable. और यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए क्या डिक्लेयर्ड है, r increases by 1.6%. तो यहाँ पे ये बताया गया कि this 1.6 is again very small compared to at least considerably small compared to 5. तो यहाँ पे हम वो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन वाला टेक्निक, वी कैन यूज दैट टेक्निक. हम सिंपली लिखेंगे द डिपेंडेंट वेरिएबल वी नॉट increases, if I write, keep on writing increases by proper power you can put, the power is -12 into change in the base quantity, that is 1.6. So that will give me V naught increases by -0.8%. Now you can understand कि if increment is negative, then its obvious consequence it is decreasing. तो हम कहेंगे, और ये होना भी चाहिए स्टूडेंट्स. अब देखिए जैसे मैंने कहा था कि if the power is negative, then if this quantity reference variable increases, then orbital speed must decrease. तो यहाँ पे बेसिकली आप कह सकते हो कि ऑर्बिटल स्पीड increases by -0.8%, और you too can say orbital speed decreases by 0.8%. ठीक है. तो these were the examples जिसमें हमने देखा कि 5% से कम चेंज है. What if the change is more than 5%? Then how to tackle the questions? See, if the change is beyond 5%, condition for change in reference variable x is more than 5%. Usually in questions you will find either the question maker will tell you कि this quantity is changing by suitably or considerably less than 5%, like 0.2%, 0.5%, या तो फिर आपको बताया जाएगा कि जो चेंज है it is well far beyond 5%, like they will never ask you about 5.2% or 5.1% or exactly around 5%. They will ask you about 20%, 10% or say 40%, like this. So say the change is far beyond 5%, then how to tackle? See, in such case delta y upon y is equals to n times delta x by x is not applicable. Then how to go for it? See, if reference variable changes from initial to final value xi to x final, as a consequence the dependent variable y changes from yi to yf, and already we know that relation y proportional to x to the power n. Is it fine? Then using this we can write y final to y initial ratio is basically x final upon x initial raised to the power n. So this is how we can find the ratio of y final value to y initial value. Now see, if you subtract 1 from both the sides, y final y initial -1, on the right hand side if we write
this x final upon x initial raised to the power n minus 1 on the both the sides. अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यू कैन सी दैट दिस पार्ट इज बेसिकली y final up minus y initial upon y initial. Basically this is nothing but delta y upon y, isn't it? This is delta y upon y. So this is how we can get the fractional change in y, delta y upon y. इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स x final to x initial raised to the power n minus 1. तो ये आ जाएगा फ्रैक्शनल चेंज. अब फ्रैक्शनल चेंज को अगर दोनों साइड्स पर अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो, if you multiply 100 on both the sides, you will get the percentage change in y. So remember, this is the approach for change in x more than 5%. तो इसी अप्रोच को यूज करके हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ऑलराइट, always remember, if the change in base variable or reference variable is given to you in a question and what is the change in this quantity, उसे आपको डेफिनेटली डिपेंडेंट वेरिएबल रखना है. सो डिपेंडेंट वेरिएबल आपको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखना है और रेज टू द पावर 1. नाउ टेक दिस क्वेश्चन, इसी को हम इस अप्रोच से सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन में ये बताया गया स्टूडेंट्स, फॉर ए मूविंग बॉडी इफ लीनियर मोमेंटम increases by 20%. See, this 20% is far beyond 5%. All right, then find change in its kinetic energy. ये है क्वेश्चन. अब यही क्वेश्चन ऐसे भी दे कैन आस्क यू कि लिनियर मोमेंटम इज चेंजिंग बाय से 0.5%, देन फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. देन वहाँ पे हम पावर फंक्शन का बेसिक बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन अप्रोच लगा के बहुत इजीली हम पा सकते हैं रिजल्ट. बट यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स ये अप्रोच लगाना पड़ेगा एज द चेंज इज फार बियॉन्ड 5%. तो देखिए सबसे पहले कि काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम, ऑल ऑफ अस नो इट इज p² upon 2m. Although nothing is mentioned here, so we can regard mass to be constant. तो यहाँ पे जो हम डिपेंडेंस यूज करेंगे स्टूडेंट्स वो है k proportional to p². See, the base variable is p, linear momentum, and the dependent quantity is k. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ड्यू टू चेंज इन मोमेंटम से फ्रॉम p इनिशियल टू p फाइनल, जो चेंज हमें यहाँ पे बताया गया है कि इनिशियल वैल्यू को इफ वी रिगार्ड 100, then 20% rise के बाद it will become 120, isn't it? So as a consequence, kinetic energy Ki changes to K final. All right. See, the dependence is K is proportional to p². Therefore, we can write K final to K initial should be equals to P final to P initial whole square. That will be equals to P final is 120. P initial is 100 whole square. Now this is 1.2 square, it will come out to be 1.44. Next, the approach is when we got y final to y initial, subtract 1 from both the sides. So we can get k final upon k initial minus 1, that is nothing but delta k by k, which is equals to, it is coming out to be 0.44. So this gives us the fractional change. So if it is fractional change, then what is percentage change? If you multiply 100 to both the sides, you will get 44%. All right. Now the change is reported in two manner. I think आप ये जानते हो. See, if initial value is taken to be 100, the change is called changes by, and the final value is called changes to. तो याद रखना, जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस इज कॉल्ड, दिस इज चेंजेस बाय दिस मच %, और जो फाइनल वैल्यू है, फाइनल वैल्यू को इनिशियल को 100 मानती है, फाइनल को हम कहते हैं दिस मच
चेंजेस टू। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें क्या मिला स्टूडेंट्स, हमें मिला कि काइनेटिक एनर्जी के आई चेंजेस टू के फाइनल if I take 100 as initial kinetic energy after 44% of growth, we can say this is 144. So this change should be reported in this manner. Two ways it can be reported. हम इसको कह सकते हैं कि kinetic energy increases by 44%. As I told you कि यहाँ पे देखिए जो डिफरेंस है इन दोनों में, डिफरेंस कितने, इनिशियल को 100 लिया है हमने, we had taken initial to be 100, जो भी डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है 100 में, 44. सो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय 44. या तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर फाइनल वैल्यू को रिपोर्ट करते हैं इट शुड बी चेंजेस टू, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस टू 144%. ठीक है, तो ये रिपोर्टिंग याद रखना कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इन ऑप्शंस यू कैन हैव बोथ दी ऑप्शंस लाइक चेंजेस बाय और चेंजेस टू. ये दोनों पर आपको यू हैव टू बी कंसर्न्ड अबाउट, यू हैव टू बी फोकस ऑन दिस, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस स्टेटमेंट्स. ऑलराइट, तो बच्चों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, आई शुड टेल यू कि देखिए एक क्वांटिटी, सपोज एक क्वांटिटी, एनी क्वांटिटी, सपोज क्यू, क्वांटिटी क्यू बिकम्स 2q. अब इस चेंज को आप किस तरीके से कहेंगे, हम कह सकते हैं कि अगर इनिशियल को 100 मानते हैं तो देखिए फाइनल बन गया 200. तो जो डिफरेंस है तो हम कहेंगे यहाँ पे q, क्वांटिटी q चेंजेस बाय, जो डिफरेंस है इन दोनों का देखिए कितना 100 है, 100. याद रखना कि इस तरीके प्रेडिक्शन में, इस तरीके से डिक्लेरेशन में हमेशा इनिशियल को, ऑलवेज इनिशियल हैज टू बी टेकन टू बी 100. ऑलराइट, या तो हम ऐसे कह सकते हैं कि Q चेंजेस टू मतलब फाइनल वैल्यू, देखिए इनिशियल को हमने 100 रिगार्ड किया तो फाइनल को क्या कहेंगे, 200%. सो Q चेंजेस बाय 100% एंड टू 200%. सपोज कीजिए काइनेटिक एनर्जी K से लेकर 4 टाइम्स बन गया 4K. ठीक है, तो इसको हम कैसे रिपोर्ट करेंगे, हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी increases by 300% हम लिखेंगे. Why so? Because देखिए k को अगर आप 100 लिखते हो तो 4k को ऑब्वियस सी बात है आप 400 लिखेंगे. अब डिफरेंस कितना है बताइए, डिफरेंस है 300. So therefore kinetic energy increases by 300%. Whereas kinetic energy आप लिख सकते हो increases to कितना, to it is final value that is 400%. तो इन स्टेटमेंट्स का आप हमेशा ध्यान देना. ठीक है, फाइनली लेट अस टैकल अनदर क्वेश्चन. लेट अस सी whether we can solve this question or not using the same for changes more than 5%. Take an example of relation between time period of a simple pendulum and its length. See, the question is given that if length of a simple pendulum increases by 69%. So starting में लेंथ मान के चलो 100 सेंटीमीटर है, फाइनली इट बिकम्स 169. सो 69% इंक्रीज. ऑलराइट, चेंजेस बाय, सी इंक्रीजेस बाय, द डिफरेंस इज 69. इनिशियली अगर 100 है तो फाइनली 169. देन फाइंड द चेंज, वी हैव टू फाइंड द चेंज in its time period. देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स डिस्कशन में देयर आर टू क्वांटिटीज, वन इज लेंथ, वन इज टाइम पीरियड, एंड टाइम पीरियड इज अननोन. सो टाइम पीरियड हैज टू बी केप्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विथ पावर 1, और फॉर्मूला भी यही है, हम जानते हैं कि टाइम पीरियड इज गिवन बाय 2 पाई अंडर रूट ऑफ व्हाट, अंडर रूट ऑफ लेंथ अपॉन जी. है कि नहीं बताइए. सो यहाँ पर हम कहेंगे कि लेंथ इज चेंजिंग एज ए कंसिक्वेंस, टाइम पीरियड इज चेंज, 2 पाई एंड जी आर कांस्टेंट. सो द डिपेंडेंस इज कमिंग आउट टू बी t is proportional to basically under root of L, or you too can say L raised to the power half. Now you can straight away write t final to t initial, final to initial value को आप कंपेयर कीजिए अंडर रूट ऑफ
लेंथ फाइनल टू लेंथ इनिशियल। तो इसको क्या लिखना है, इनिशियल को इफ आई टेक 100, देखिए 69% ग्रोथ के बाद एल फाइनल विल बिकम 169, so it is coming out to be under root of 1.69. all of us know this ratio is 1.3. see, this is not fractional change, we got the ratio of final to initial value of dependent variable. Then how to get the fractional change in dependent variable? Just subtract 1 from both the sides, you will get t final upon t initial ratio minus 1. on the right hand side you will have 0.3. this part is basically delta t upon t, isn't it? So this is fractional change. Multiply 100 to both the sides, you will have delta t upon t into 100. on the right hand side you will get 30%. so this is the final reporting, 30%. तो इसे हम कैसे समझे, हम कहेंगे कि देखिए लेंथ इनिशियल चेंजेस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। अगर इसको हम इनिशियली 100 कहते हैं तो फाइनल लेंथ बिकम्स 169 ड्यू टू 69% इंक्रीमेंट। एज ए कंसिक्वेंस time period ti increases to t final, and what is the ratio we are getting? if it is initially 100 it becomes 130 after 30% increment. तो इसको हम दो तरीके से रिपोर्ट करेंगे स्टूडेंट्स, अगेन जैसे मैंने आपको बताया था कि चेंजेस बाय एंड चेंजेस टू। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितना है 30, तो हम कहेंगे टाइम पीरियड t increases by 30%, या कह सकते हो कि टाइम पीरियड t increases टू द फाइनल वैल्यू दैट इज 130%। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को मैनेज करते हैं। और दूसरी बात ये देखिए कि यहाँ पर जो पावर का इफेक्ट मैंने आपको बताया था कि इफ द पावर इज पॉजिटिव देन द नेचर ऑफ चेंजेस आर द सेम। यू कैन सी इन दिस रिलेशन वी कैन राइट टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू L raised to the power half. See, this half is positive, so therefore the positive change in length gives us positive change in time period. So this is the result you can see. As length increases 69%, as a consequence time period also increases but by 30%. इसको हम दो तरीके से रिपोर्ट करते हैं, increases by 30% और increases to 130%, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत कॉमन है स्टूडेंट्स। तो बाकी if you find questions like percentage change, always keep track of two things, whether the change in the base variable is less than 5% or not. If it is less than 5%, well and good, आपको क्या करना है n times the percentage change in the base quantity, जो अप्रोच मैंने बाइनोमियल से बताया। और अगर देखिए 5% से sufficient change है तब in such case you cannot apply binomial approximation. In such case you have to find y final to y initial ratio, then subtract 1 from both the sides, then multiply with 100 to get the percentage change. I hope you understood the concept I have explained you.